हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडी इन्वेस्ट। मैं धर्मवीर कोलकाता से पंडी इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। चलिए बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की। उसके पहले पहले बात करें अमेरिकन इंडेक्स के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि करेक्शन जब मार्केट करीबन 18,000 के लेवल था तभी मैं करेक्शन का उम्मीद बताया था और टारगेट भी बताया था 16,600। टारगेट अचीव हो चुका है आज और 16,350 का भी टारगेट हिट हो गया है। उसके बाद निफ्टी का क्या चाल रहेगा, बैंक निफ्टी का भी क्या रहेगा रुख, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अमेरिकन इंडेक्स डाउ जोन्स के बारे में बात करें कि डाउ जोन्स अभी क्या बता रहा है। डाउ जोन्स दोस्तों वीकली चार्ट है डाउ जोन्स का और यहाँ पे डबल करेक्शन चल रहा है अकॉर्डिंग टू इलियट वेव थ्योरी के अनुसार। सो इन डाउ जोन्स देयर इज गोइंग ऑन डबल करेक्शंस as per Elliott wave theory. So where the correction is going to be end, if it's mark here this channel, then we are expecting to come around 31,500 levels, that will be target of the Dow Jones, or it might be because showing a doji. So in that case 31,800 we will level for looking for support in Dow Jones, and then we can see a reversal going to be happen from here. So if you see the RSI is almost oversold, not yet oversold, but near to 30. Yes. Last support was taken near 34, and this was extreme case in year 2020. So we might not going to see that level. So in that kind of scenario, I think 34, 33 or even 30 will be the support in RSI, and from there we can see a reversal in Dow Jones. So this is the story of Dow Jones in weekly chart. If we go to in daily chart, in daily chart Dow Jones still below 200 DMA, and you can see a doji again just like in our market. So it going to be acting support here, this level. So if Dow Jones fail to trade below this low, that was 32,272, currently at 32,434, that hardly 200 points from here. So if break 32,000 level, then 31,750 to 31,500 we can see a target in Dow Jones, and from there we can expect a reversal from here. So almost I think the correction is going to be end in Dow Jones very soon, and if in extreme case or worst scenario if break 31,000 levels, then we can see a recessions and we can see a huge fall below 30,000 levels, and target will be 28,000 levels in Dow Jones. That is only in extreme case. So we are looking that market can reverse from this range between 31,700 or 32,000 levels in Dow Jones. Let me see about the Nasdaq. Nasdaq ऑलरेडी जनवरी से फॉल हो रहा है, जैसे कि मैंने अपने पेड मेंबर्स को भी बताया था आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी और Nasdaq 100 का गिरावट के बारे में, और ऑलरेडी एक गिरावट कंप्लीट होने वाली है 1 2 3 4 5. So 12,000 will be act as support in Nasdaq, and from there we can see a reversal going to be happen. So if break this 12,000 level in Nasdaq, currently at 12,693, that is almost 700 points to go, and from this area we are looking for to come, and from there we can see a reversal, and unless this level is act as resistance, if break this, then we can see a more upside in Nasdaq.
So keep an eye 12,000 levels in Nasdaq. If Nasdaq get bounced, then our IT index will also we go in reversal, and we can see a bullish trend, and long bullish trend will be there in our Nifty IT. So now we come to our Nifty. Then we will see talk about the Bank Nifty. So in the last video I talked about the Nifty, and Nifty was this levels. At this level I think so I've given the levels that 18,100 if not crossed, then we can see a corrections, and I've given the levels that if the low previous low of 15,000 can break, and this is the target. But today's scenario अगर आप देख सकते हैं कि एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है निफ्टी में, और पिछला वीडियो में टारगेट बताया था 16,600 और उसके नीचे गया तो 15,600 जो प्रीवियस लो है उसको भी काट के नीचे जा सकता है निफ्टी। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है निफ्टी इसको कटेगा, लेकिन आज फ्राइडे दोजी बनाया है यहाँ पे। अब इसके ऊपर एक ये जो कैंडल है आपको दिख रहा है 16,484 सॉरी 16,654, इसके ऊपर कल ओपनिंग होता है डायरेक्ट एक गैप ऑफ ओपनिंग above this level 16,650, then you might see a good upside levels, then you must think that correction is over. So this is only for reversal sign in Nifty. If any gap of opening, straight way gap of opening, direct gap of opening at 16,650 and close above these levels and surpass 16,700 16,800 levels, then only we think about the reversal. Otherwise 15,600 is coming. So I have discussed about both the scenario. If any gap of opening, only gap of opening above 16,650 straight way and close above 16,800 levels, then you think about the reversal in the market. Otherwise 15,600 levels is coming later or sooner. तो 15,600 लेवल आ सकता है। अगर 16,800 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देती इस वीक में, तो हम 15,600 तक जा सकते हैं निफ्टी में, और उसके नीचे भी जा सकते हैं। इसके साथ आपको डाउ जोन्स और नैस्डैक का भी देखना पड़ेगा। अगर वहाँ रिवर्सल आती है अमेरिकन मार्केट में, तो हमारे मार्केट भी रिवर्स कर सकता है। अगर हम RSI देखें तो डाउन साइड थोड़ा सा बचा हुआ है। अभी RSI 35 चल रहा है, तो 30 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ से हमेशा मार्केट टर्न अराउंड होता है एट द लेवल ऑफ 30 RSI। तो RSI को नोटिस करेंगे। जैसे ही RSI 30 हुआ, आप यहाँ पे शॉर्ट मत कीजिएगा। जो जिन लोगों ने शॉर्ट होल्ड करके रखा है, या तो आप मंडे को प्रॉफिट बुक कर ले या 15,600 लेवल प्रॉफिट बुक करें। आपका स्टॉप रहेगा 16,800 ऑन क्लोजिंग बेसिस। सो दिस इज फॉर आइडिया। एंड इफ यू सी द वीकली चार्ट ऑफ द निफ्टी, यहाँ एक दोस्तों बता रहा है हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन दिख रहा है मेरे को। अगर आप उसको देखें देखिए हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे। अगर निफ्टी यहाँ पे पॉज हो जाती है मंडे या दिस वीक क्लोजिंग 16,800 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग देती है, तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हो सकता है और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है 20,000 के लिए। तो कृपया ध्यान रखें, दोनों सिनेरियो में बता चुका हूँ, नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल। नीचे का लेवल 16,000
15,300 के नीचे क्लोजिंग होता है तो 15,950 से लेके 15,600 का लेवल आपको नीचे देखने को मिलेगा। ऊपर 16,800 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो सीधा 17,150 एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर 17,150 लेवल नोट कीजिएगा, 17,150 इसके ऊपर मार्केट क्लोज देता है निफ्टी कंसेक्यूटिव 3 ट्रेडिंग सेशंस, तो फिर हम 20,000 का लेवल आने वाले दिनों में देख पाएंगे। तो मैंने ऊपर का और नीचे का लेवल बता दिया हूं, इसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा आने वाले दिनों में। क्योंकि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, डेली चार्ट में भी सेम कैंडल दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर है, एक राइट शोल्डर है, एक नेक लाइन, ये आपका हेड है। तो इस हिसाब से अगर इस ये नेक लाइन एरिया है, इसके ऊपर क्रॉस करता है तो फिर यहाँ से बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता है गैप डाउन ओपनिंग, तो फिर आप निश्चिंत रहे, 15,600 कटेगा और उसके नीचे भी जाएगा मार्केट। अगर गैप अप ओपनिंग होता है, ये जो गैप है आपको यहाँ पे, इसके ऊपर गैप ओपनिंग हो जाता है तो एक रिवर्सल कंप्लीट और परफेक्ट रिवर्सल देखने को मिलेगा और फिर मार्केट सीधा स्ट्रेट वे 20,000 के तरफ जाएगा। क्योंकि LIC का IPO लिस्टिंग होने वाला है 17 मई, तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है LIC के कारण उसको ऊपर जाने के लिए, शेयर मार्केट को बढ़ाने के लिए मार्केट ऐसा कर सकता है। तो ये रहा आपका निफ्टी का। अब हम बता दें आपको बैंक निफ्टी का। नाउ बैंक निफ्टी सेम फॉर्मेशंस, इसका भी देखिए हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ भी इसने एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन किया है, इंडिसीजन डोजी। अगर यहाँ एक गैप ऑफ ओपनिंग होता है इस कैंडल के ऊपर 35,150, तो फिर मार्केट रिवर्स हो जाएगा यहाँ से और फिर स्ट्रेट वे और न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। और यहाँ से करीबन 5,000 पॉइंट, मतलब समझ लिए 50,000 लेवल्स we are going to see in Bank Nifty. If Bank Nifty straight way open gap of opening above 35,200 levels, then we are going to see a big reversal from here and we are going to see 50,000 levels in Bank Nifty sooner or later. But if any case a gap down opening below this candle that is Friday candles support these levels, then we are going to see 33 to 32,000 levels on the downside in the Bank Nifty. So please note both the levels, breakdown point and breakout point. Breakdown point, if gap down opening below Friday low, that is 34,300 levels, then we are going to see 33 to 32,000 on the downside, and on upside if a big gap of opening only above 35,200 levels, then we are going to see straight way a big reversal from here and target will be 50,000 levels on the upside. So I have given you both the scenario, bullish point of view and bearish point of view, and this both bearish and bullish point of view will be active till month of June. So according to this level you have to work or trade accordingly. So don't get excessive position in options because market is nearly to oversold range. This is the daily chart, and if you see in daily chart RSI is in oversold range. So we might see a gap of opening tomorrow at this level. 35,100 will act as resistance. This will be act as resistance for Monday, and if Bank Nifty fail to move above
35,200, then we might see a good corrections. Then again we can see 34,000 on the downside, and then upside, and then we'll see 33 to 32,000 on the downside. So this is with the trading style strategy for coming days. According to these levels, you have to trade and in bank nifty future or nifty futures or in options trading. Now we will discuss about some sectorial index. Uh, First we will go over the Nifty IT. I've show you the Nasdaq chart, and the same here. This is the Nifty IT weekly chart, similar to Nasdaq. So you can see some space is left for correction still here. So we might see till around 30. So RSI also indicating a head and shoulder. No, it's broken. So we can see till 30 to come in RSI. So still third wave is going on in Nasdaq, Nifty IT. So in fourth wave we can see a bounce from here. This is supposed to be 1, 2 and 3 is coming, 4 and 5. So this is a strategy of Nifty. This is weekly chart of the Nifty IT. If we go to daily chart, yes, so we are expecting a bounce in Nifty IT, currently trading at 30,719. So 1500 bounce can see in Nifty IT in the form of wave 4, and then again a correction can happen till 28,000 levels in the Nifty IT. So this is for Nifty IT. Now we'll see Nifty mid cap, a small cap. So first we will see Nifty metals, then we'll come to mid cap. In Nifty metals, again a pin bar formation here. You can see this is a bullish pin bar formations. Whenever this kind of pin bar formation is generated at a lower end of the market, and after corrections, then we can see a gap of opening here, and market can get reversal from here. You can see a shooting star formation here. This is a shooting star formations, and from there we see a good corrections. So this is the daily chart, and still Nifty metal is above 200 DEMA. So we are expecting, if any gap down opening, then we can see might till 5,800 levels, and from after touching this 200, testing 200 DEMA, we can see a good reversal in Nifty metals. Or if any gap of opening from here, suppose this levels, the level is coming out 16,150. So any gap of opening above 16,150 in Nifty metal, we are going to see a big reversal signal. Or if any gap down opening below this candle 5980, then we are going to see to touch a Nifty metals index at 200 DEMA, and that is 582002. That is almost 200 points only. So I don't think that nothing is much left. Only this kind of only small space is left in correction in Nifty IT. Now we'll discuss our Nifty Auto.
In Nifty Auto, same kind of pattern just like Nifty. So if head and shoulder formation to come, then I think the candle must come till 10,050. Currently now 10,518 trading. So 500 points can fall in Nifty Auto, and from there we can see a reversal if to make a inverted head and shoulder pattern. Nifty Pharma still in corrections. FMGC. Okay, Nifty Pharma we'll see. Yes, Nifty Pharma same kind candle. If any gap down opening, then we can see a correction till here. The reversal only above closing about 200 moving average, that is 13,800 in Nifty Pharma. Otherwise, we are going to see a correction till 12,220. Nifty FMGC is showing a bullish engulfing curve, but it is still below 200 DEMA. So we can test 200 DEMA only closing above 200 DEMA 3 consecutive days and crossing these levels. Only we can see a good upside. Otherwise, we can see to fill up this gap or this level to make a inverted head and shoulder. This level have to come. The level is at 35,315. जब तक 35,315 ना आवे इसको लीजिएगा नहीं, या जब तक इसके ऊपर क्रॉस ना करे इन 38,800 FMGC साइडवेज मूवमेंट में रहेगा. निफ्टी एनर्जी ये बुलिश स्टैंड दिखा रहा है और इस हाई को क्रॉस करते ही एक नया हाई बनाएगा. या आप एक जब तक इस ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, 200 डेमा को ब्रेक नहीं करता है, तब तक ये बुलिश ट्रेंड में रहेगा. निफ्टी एनर्जी ये न्यू हाई बनाते जाएगा. अभी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ये काफी वीक लग रहा है और नीचे आने की संभावना ज्यादा है और इस लो को एक बार टेस्ट जरूर करेगा 15,029. तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस गोइंग टू टेस्ट दिस लो, previous low, even or can break previous low, and the next support will be 14,000 levels on a downside. So be careful in Nifty financial service stocks. Only above 200 DEMA is a bullish sign, otherwise it is in downtrend and going to be correct further. Nifty Realty, yes, same as Nifty financial service, going to test previous level 390 or even can see a further downside 360. Nifty small cap, so support is only previous levels. If this support is break, then we can see a big fall or big crash in small cap, and then the next support will be 8475.
Only positive thing is that RSI is near to oversold zones, so we might see till here and then again see it to test 200 demo on upside. So keep an eye on small cap index. Nifty media, uh, yes, will come to this level and then we will think only close above 200 demo. So all are in still correction point of view. Only Nifty energy is looking bullish, and very bearish is Nifty financial service, Nifty media, and the last one we have saw, and Nifty auto, and Nifty metal and Nifty energy can give a good profit, handsome profit, because both are above 200 demo. So this is for the view for any market for tomorrow. Best of luck. Have a profitable day and keep stop loss in your systems and accumulate quality stock at low level. This is the opportunity if you are going to see a big fishing, bottom fishing at quality stock, especially in mid cap, small cap, and you will get a handsome return in coming next year. So thank you for watching Pandit Invest. Please like this video and please subscribe and also join Telegram channel Pandit.